Harley rides are never just about reaching a destination. It's about people, the roads, and stories in between. What's up guys, welcome back to my channel and I hope you are all doing well. Today, almost 20 riders are rolling out together, chasing curves, mountain roads and that freedom only riders understand. We are headed somewhere beautiful, hosted by one of our own, but destination reveal abhi nahi karte. Right now it's just us, the machines and the open roads. So let's get into action. Whatever, just follow that link. We are all there. Rakesh is going to be ahead with. So after rolling out from the city, it was the usual chaos at first. Traffic, signals, honks. That stop and go rhythm we all know too well. But slowly, the noise faded. वैसे तो गाइस दिस इज अ गुड सिटी लाइन व्यू. तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं we'll definitely find some very attractive scenic views. Buildings turned into open stretches, concrete turned into greenery, and before we even realized it, we were climbing into the ghats. The roads started throwing those beautiful twisties at us. Sharp bends, smooth curves, long sweeping bends, where you just lean in and let the Harleys talk. Guys, now just look at the view. That's what we ride for. The freedom and the blissful roads. One by one, almost 20 machines echoing through the mountains. That sound hits different in the ghats. We took a few mini breaks along the way. Chai stops, helmet off conversations, random laughs. वही क्लासिक राइडर एनर्जी जहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं है. So guys, that's when it starts break in between. Let's continue our ride. And guys, we are at Lonavala, enjoying direct sunlight right on the face. Damn, these roads, yaar. And then suddenly, the road opened to something breathtaking. The Bhavna Lake. Calm, wide, almost silent. अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, Pavna Lake is actually an artificial reservoir built around the Pavna Dam, surrounded by the forts like Tikona and Lohagarh. But over the years, it's become a hidden escape for riders and campers. Early mornings here feel unreal. Mist floating over the water and the mountains guarding it from all sides. आगे थोड़ा और राइड करते हुए we reach the final stretch to meet him. ये है Mr. Nayan Limbache, a proud Hawk member, but more than that, a man with a vision. And the owner of the place we were headed to on this ride. Instead of just sending us a location pin, he led us personally through a route, slightly adventurous, a little raw, a little offbeat, but insanely scenic. चलो गाइस, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं. अरे वहाँ कसम, गया. Okay, and we are here. This property belongs to Nayan Limbache. He have put his all efforts and built by himself. And right there, tucked into that landscape, was his creation, the nest egg.
नॉट अ कमर्शियल प्रॉपर्टी वाइब, नॉट ओवरडन, पर इस जगह की एक पर्सनालिटी थी. While showing us around, Nayan casually mentioned, most of this I built it myself. And I thought he was joking, but he wasn't. The bamboo structures, handmade. The setup spaces, DIY. By the way, he calls this spot. I call it a G spot there. Deck पे 10-15 से ज़्यादा allowed नहीं है. So this property is Even this colorful wing installation where we clicked all those dramatic group and solo shots, yeah, built by him. 3 years of consistent effort, one vision at a time. And at such a pleasant place, he hosted us for a breakfast. Of course, I had to ask him some slightly annoying questions. टेबल कुर्सी भी बना है. नहीं, केवल अंदर का जो फर्नीचर है वो आप देखोगे बाद में. हाँ. अच्छा. सिटिंग एरिया. मस्त है. दोपहर को अगर वहाँ पे धूप लगता है Amazing property, guys. You should definitely come here. Let's stay at Pauna. And as if the day wasn't already perfect, it was holy. So yes, colors came out, energy went full power from ghats to grills to gulab. और ऐसे ही कुछ खूबसूरत राइड्स पर हमेशा वो मोमेंट आते हैं where helmets go back on, engines fire up again, and everyone silently knows अब वापस निकलना. Thank you so much for the hospitality. Great hospitality. Thank you so much. brotherhood कोई बात नहीं. Yes, yes. Your this thing, lower back pain. Leaving Neste wasn't easy, yet we rolled out once again. This time heading towards one of the most iconic riding roads around Pune, the Tamhini Ghat. So guys, we are on our way back to home, but apparently we have lost our group. So we are on our own. गूगल माता की भरोसे अभी तो 3 घंटे का और रास्ता बता रहा है, बट लेट्स सी. आई विल एंजॉय दिस सीनिक व्यूज. कुछ इंटरेस्टिंग रहा, नॉट सो सीनिक बिकॉज कड़ी धूप है, बट मैनेजेबल. Up until then, enjoy these views. And the moment the road started climbing again, it reminded me why riders love this stretch so Guys, much. this scenic beauty in the Tamini Ghats is damn amazing. Some roads test your riding skill, some roads test your patience, but roads like Tamini, they remind you why you started riding in the first place. BMC, कुछ सीखो इनसे. साला इन लोग पहाड़ों पे इतना स्मूथ रोड्स बना दिया, तुम लोग को रोड्स पे स्मूथ रोड्स बनाना ही नहीं हो रहा है. इतना लंबा स्ट्रेच और साला एक भी खड्डा नहीं है. मुंबई BMC should take lessons from PMC and NMMC. Jokes apart, some rides are about distance, some are about destination, but this was about people, passion, and a place built by one of our own. So guys, I took a short break from the ride just to open up, and this is the view. चलो अब आगे राइड कंटिन्यू करते हैं. Guys, the places here have got weird names. एक था पीछे Wamandhar, and there was one Kandroli. Here's one Asrewadi. Oh no, not Asrewadi, Asrewadi. Just talking about Asroli, my ass needs a reboot after almost 260 kilometers. So now we have 20 more to go. And guys, we have finally reached home. It has been quite a ride with almost close to 300 kilometers done today for the round trip. There's one thing that I've noticed with this ride as I completed more kilometers this time, that no matter how comfortable your seats are, your low back, your neck, your entire posterior chain gets stiff. I'll think about posting a few mobility and strengthening exercises about this in this vlog, or maybe in the future. Yeah, maybe Instagram page. Do follow me on my Instagram as well, Coach Satyanjay. But of course, reality always comes back, because अगली सुबह
Instead of leaning into the ghats, I was back to saying up. Good. yesterday it was throttle control, today it's core control. From chasing the mountain curves to helping my clients chase their fitness goals. Different kind of grind but the same energy. Same, but different. गुड सर, अभी मज़ा आया. Because रोड पर हो या जिम में, consistency is what keeps you moving forward. इसको पूरा यहाँ तक लाओ. अब इसको खींचो. अब यहाँ पर 2 फिंगर्स रखो. ब्रीद इन ब्रीद आउट करो पूरा. ठीक है, ये ऊपर नीचे जा रहा है. अभी इस पे मैं वेट रख रहा हूँ. ठीक है, वेट पे जस्ट एक फिंगर रखो ताकि वो गिरे ना, जस्ट सपोर्ट के लिए. हाँ, सेम थिंग अभी फिर से करो. यस, ठीक है. अभी आपको ऐसे करना है कि ब्रीद आउट करना है और फिर ब्रीद इन करना है और फिर वेट ऊपर नहीं जाना चाहिए. स्टमक होल्ड इन करके रखना है. हाँ, ठीक है, ऐसे ही रखो. नॉर्मल ब्रीदिंग करो अभी. ठीक है, दैट इज़ व्हाट कोर इज़ एक्टिवेटेड. ठीक है, ये अभी कड़क है, छोड़ दो हवा. हाँ, ये अभी लूज हो गया. हाँ, टाइट कर हाँ. अभी इसी जगह पे इमेजिन करो आपने बेल्ट बांधा है, जो वो लिफ्टिंग वाला. सेम चीज़ करनी है. ये आपके 6 पैक्स, इसको भी हाइड करता हूँ. ये आपके एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक्स, इनको हाइड करता हूँ. ये मसल है. अभी देखो, इसको अगर मैं हाइड करूँगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है. इसके अंदर सीधा आपका लीवर, किडनी, वो सब आ जाएगा, इंटेस्टाइन्स. तो ये मसल देखो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, चेस्ट के नीचे, बिल्कुल रिबकेज को लग के आता है. ठीक है, एंड ये पूरा ऐसे होता है आगे से, एंड पीछे तक अगुन है, वहाँ तक अटैच है. और एक्चुअली ये रिब्स को यहाँ तक अटैच होता है. ठीक है, तो जैसे रिब्स फूलते हैं वो भी फूलता है. जैसे रिब्स का कंट्रोल कर सकते हैं वो भी फूलता है. लंग्स को फुला रहे हो, कर रहे हो, तब रिब्स फूलते हैं. ठीक है, रिब्स के बीच में मसल्स और टेंडन्स होते हैं, तो उससे वो इलास्टिसिटी बनी रहती है. अब रिब्स के नीचे जहाँ से वो मसल शुरू होता है, वहाँ पर डायफ्राम होता है. वो प्रेस आउट कर, वो भी फूल जाता है, तो वो नीचे की तरफ फूल जाता है, फैल जाता है. तो जो स्टमक है वो बाहर आ जाता है. तो वो स्टमक बाहर रोकने के लिए वो मसल है. ठीक है, ताकि आपका कोर टाइट रहे. ठीक है, तो वो नाक से लेना है. नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो होल्ड करते हुए भी आप थोड़ा बहुत ब्रीदिंग कर सकते हो. ऐसा नहीं कि पूरा ब्लॉक्ड रहेगा. 6, 4 मोर, 3 मोर. इज मोर अबाउट स्टेबिलिटी. 1 लास्ट. गुड. स्विच फॉरवर्ड. गुड. 5, 4, 3, 2, 1. गो बैक.